अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम दिगाया म्यूज़ियम का सेकंड पोर्शन जो है तो वो विज़िट करेंगे। इससे पहले पहला पोर्शन जो है वो एक और व्लॉग में हम विज़िट कर चुके हैं। وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. Daegaya Museum, रॉयल टॉम। ये शेर है या ड्रैगन है या क्या चीज़ इन्होंने बनाई हुई? इसका नाम है रॉयल टॉम पवेलियन। रॉयल टॉम। चले आ जाएं। ये बीसी टिकट में इंक्लूड है ना? असली यही कहा था। हाँ। और इनके लेकिन यार पाँच पाँच इकट्ठे जाएंगे ना, मसला वही है। अब ये आप सारे घूम तो फिर कुछ होगा। हमजा पहले अंदर देख लो फिर आकर बाहर पिक्चर्स बना लो ना। ये देखो दिखाया फॉर्म में आया है। वही टिकट है ये होगा। हाँ तो ये कार्ड में स्टार्टिंग में कॉल वापसी कर ले फिर वो चलो नेक्स्ट हम तो अभी आएंगे। बाकी वाला टिकट है। अच्छा माशाल्लाह, आपको बोलना आता है। आपको समझ आ जाएगी, मुझे समझ नहीं आती। आ जाओ ना ईद में। नहीं सेवा ये तो उनकी पूरी तहजीब है यार। 어디서 오셨어요? देगाया जो एक पूरी एक किंगडम थी यहाँ पर, उसकी तहज़ीब में ये चीज़ शामिल थी, उनके रिवायात में ये चीज़ शामिल थी कि जब उनका कोई किंग जो था, बादशाह जो था, वो अगर मर जाता तो उसके साथ कुछ लोग या कुछ जानवर जो हैं तो उनको भी दफन कर दिया जाता। और ये एक किस्म की कुर्बानी, ये लोग इसको तस्वर करते थे कि ये हम एक कुर्बानी दे रहे हैं। ये अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्टेप वाइज ये पूरे प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो स्टेप वन में ये लोग असल में जगह वो कर रहे हैं, डिग आउट कर रहे हैं ताकि यहाँ पर फिर लोगों को दफन किया जा सके। ये अब सेकंड पोर्शन, सेकंड जो स्टेप हम कह सकते हैं वो ये होता था कि ये लोग पत्थर से जो ताबूत थे वो बनाते थे और पत्थर के चैम्बर्स जो थे ये बनाते हैं। तो ये इस सेकंड पोर्शन में इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। इस थर्ड स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं तो वो जो मैयत होती है तो उसको जो कब्र है जो इन्होंने खोदी थी तो उसमें रख रहे हैं, और ऊपर जो है तो जो इनकी कुछ चीज़ें होती थी वो भी साथ रखते थे तो वो भी रख रहे हैं कब्र में ही। ये अब फोर्थ स्टेप में असल में ये अब कब्र के ऊपर जो है तो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रखते थे। तो इसी ये जो चौथा स्टेप आप चेक कर रहे हैं तो इसमें इन्होंने इसी चीज़ को जो है तो वो दिखाया हुआ है। ये पांचवें स्टेप में अब आप देख रहे हैं कि इसमें असल में ये लोग वो कब्र को जिस तरह एक शक्ल दी जाती है, जैसे आप चेक कर रहे हैं पीछे सब्ज़ जिस तरह आपको दिखा रहे हैं, तो ये उभरी हुई शक्ल बनाने के लिए अब ये सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि एक घोड़े पे कोई बंदा जो है वो इस सारे काम की निगरानी कर रहा है। और छठे और आखिरी स्टेप में आप देख सकते हैं कि आप कब्रें जो हैं ये वो पूरी तरह इन्होंने वो सब कुछ बनाने के बाद एक यादगार भी बना दिया उस पर, और उसके साथ जो है तो जो इनकी एक किस्म की एक रस्म थी वो ये साइड पे बैठ के अदा कर।
shows the kind of, they have a lot of equipment for the horse riding. And see here, this for the stirrups. Anyway, it shows that they can use their kind of weapons on the horseback. So it shows their kind of army force. Force. Okay. Strength So of army. it's so different in Roman Empire. They couldn't ride a horse and they use the spears or something like that. But here they can ride a horse. Or they could ride a horse and use their weapons to fight. Did you know? I just heard the name, but who is Daegaya? Daegaya is the name of the kingdom. It's not a person, it's Not a kingdom. person, it's a kingdom. The name of kingdom, and it was founded in 42, and then it finished in 562. So It- 520 years. 520. It existed 520 years, and it was about 1500 years ago. More than More than that, 1500 yes. years ago. At that time in Europe, there was Roman. On the same land, different people lived, right? So they were not the native people. They came from the northern part. In northern part, they had this kind of skill. So they kind of conquered the native people, and they took over the land. Do you think so? Here in Korea, South Korea. Mm-hmm. This Daegu area are the whole South and North Korea. Actually, Daegaya existed in the southern part, and in the southern part of Korean Peninsula, and usually in the southern and in the central. There's a map there. Where are you from? Pakistan. Pakistan. Yeah. So are you visitors? Students. Students? Here. Where do you study? Can Kyungpok National University. Kyungpok National University, Kyungpok. I was a student of that university. Oh, you are our senior. My juniors. Yeah. Glad to meet you. Thank you. उसके साथ आज उसमें क्या बनना है आपने? मैं कुछ भी बना ले. कुछ भी किंग वॉरियर कर ले. पीछे खड़े अच्छा. So how long have you been staying here in Korea? I mean, He is 8 years. No, 5 years. 5 years. 5 5 years. years. Oh, such a long time. 2 years old. 2 years. 2 years. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Okay. And just 2 months. just 2 months. You're the New. newest. So how do you like living in Korea? Are you enjoying it or? Yeah. yes. of Very course. much enjoying. Yes. Good. I'm happy to hear that. So this is your first time to visit Korea? The first time to visit this place. Yes, yeah. Yeah. On weekend usually we go outside and visit many places. So this is our brother. He Big brother? yes, big brother. So he's Brother, making brother, vlogs. not brother by blood, but brother by. I understand. Yes. Okay. So he's making vlogs. You can see. So he know more. अच्छा. सही है. ये देखो ना मौज की टांगे बिल्कुल ठीक है ये इसको बेचारे को पोलियो हुआ है अच्छा. You can move. Yes. Why your feet are She not? doesn't like you. Actually, the machine brings his real feet. क्या बनना है वॉरियर तुम वॉरियर हो ही नहीं ना, मसला ये है. और देखो इसकी पोलियो हुआ है बेचारे को ये वाले ठीक नहीं है इधर आएंगे इसने टाइट पैंट पहनी है ना मसला ये है इसका टाइट पैंट. हमारे पीछे मौज भाई को हो रहे हैं क्या यार फिर दोबारा कर दोबारा नहीं यार मसला कोई चलो
ग्लिच है हमसे डिटेक्ट ही नहीं होता. कोई नहीं, बीच में कोई नहीं. So can I give you some explanation for this exhibit? Yes, sure. Because it's time for me to finish the work. My time to get off. Oh, okay. Yes, sure. So this is the tomb. Tomb. Okay. How about going Going? up the Yes, stairs? sure. Okay. So the country was, as I explained, the country was founded in 42 and then finished in 562. This by kingdom. another kingdom. Yes. And then इनकी भी दाढ़ी आती है यार. तो साड़ी तो this सबकी थी. tomb was excavated by International University Museum staff. And then अब लड़कियां बन गई. the scholars were so amazed by what they saw here because there were about 40 people buried in the same tomb. And in the center there's the biggest room, and there was the coffin of the king, of course. And then there were two other people up and down of the coffin, and they were kind of bodyguards. And then there are two other big rooms, see, that's storage rooms. And then around the center there were 32 small kind of coffins, not exactly coffins, small rooms for the people who were forced to die to follow the king. King, okay. Okay. And what are these two guys doing? After the burial, they had a kind of ceremony, and then it shows that ceremony. After burying the kings and the people and building up the So mound, they have buried the king and the people? Okay, and this is some ceremony. After the funeral, they had this kind of ceremony. So the king died in some battle or? We don't know. We Oh, don't know. that's But, not the. Anyway, at that time, the king was like a kind of divine existence, and people were designated to follow the king. So the sacrificed people were maid, warrior, farmer, oriental doctor, a lot of people. And at that time, people believed that they would live the same life after. 562. After this kingdom. Okay, around that time. Not exactly, but around that time, Buddhism came into Korean Peninsula, and their view about the afterlife changed. So they stopped this kind of funeral. Okay, and this tomb shows that the king had this much power. And before excavating this tomb, we didn't know much about the Daegaya Kingdom. तो ये था हमारा आज का टूर, और जो है तो अब इसके 3rd और 4th पार्ट जो है वो इंशाल्लाह अगले दिनों में मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. कब सामने जा. बाय, गुड बाय.